है क्या वो Hello, good morning, bachcho. Today we are starting the new chapter. Okay, and this is a very simple one, and the name of the chapter is square and square root. Okay, and I know you all know about the what is the square, what is the square root, what is the perfect square, how can you calculate the square root of any number. So in this lecture today we are starting what is the square, what is the square root, what is the perfect square, and if there is the time, so then I will explain how can we find the square root of any number. Okay, so now let me see what is the square. So first topic is square, and inform to your classmate, please join this live session and share this video. ओके स्क्वायर एक मिनट है ओके so now first one is what is the square. For example, the number is 2 या 3 4. Okay, so when we multiply any number by itself, multiply by 2, so then answer will be 4. When we multiply a number by itself 3, so multiply by 3 9. 4 multiply by 4 means number is multiplying by itself, so then answer is 16. So then this is the concept is known as square. So we can say that what is the square of the 2. So 2 multiply by 2 means the number multiply by itself, so the answer is the solution is known as square. So the solution is 4. So the square of the 2, the square of 2, okay, the square of 2 is equal to 4. Now the square of 3 is equal to 9. The square of 4 is equal to 16. So what is the definition of the square? The square means multiply of a number या given number by itself. The solution is known as square. Okay, next one is the perfect square. perfect square. अब next जो topic है वो आपके पास perfect square. What is the perfect square? So all are the natural number. For example, 1 2 3 4 5 up to infinity, all are the number, natural number. When we find the square, what is the square of the 1? What is the square of the 2? 4. What is the square of 3? 9. What is the square of 4? 16. Next 5 25. Then similarly we can find the square of the other number. Okay, so this 4 is known as perfect square, 9 is known as perfect square, 16 is known as perfect square, 5 is known as perfect square. Means perfect square means this 16 we can write 4 into 4. Okay, this 9 we can write 3 into 3, 4 we can write 2 into 2, this 1 we can write 1 into 1. Then 525, this thing we can write 5 multiply by 5. Okay, अब अगर आपके पास आ जाए यहाँ पे 24, okay, the number is 24 and I asked to you is it a perfect square or not, क्या ये perfect square है या नहीं है. तो सर आप लोग बोलेंगे, तो अगर हम करें देखो 5 5 जा 25, so then it is less than, तो 4 into 4 करो 4 4 जा 16, but it is more than, so we can say that 24 is not a perfect square, क्योंकि ऐसा कोई पेयर ही नहीं बन रहा है. ओके, the pair of the numbers will be same, जो पेयर बनेगा वो सेम डिजिट का पेयर बनेगा, बट यहाँ पे 24 के लिए सब पॉसिबल नहीं है, तो we can say that 24 is not a perfect square. तो write in the comment section is 30 is a perfect square or not. आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो 30 perfect square है या नहीं है. I am waiting your result response. Please write in the comment section 30 is it a perfect square or not. Okay, good morning to all of the students, those are sending the good wishes. Good morning, good morning, good morning. Abhinav Rawat, good morning. Arpit, good morning. Naitik, good morning. Okay, Sivan Joshi, no sir. Okay, Aman Kharola, no. Okay, very good. And so many answers are coming, no. Okay, 30 we cannot write in the form of the pair of the same digit. This is the pair of the same digit. This is the product of the pair of same digit. So then, so this number means 4 is known as perfect square. But 30, so 30 we can write. देखो 5 multiply by 5, so 5 5 is 25. 6 multiply by 6, then it is 6 6 36. 30 को तो लिख भी नहीं सकते. 30 को क्या लिखोगे सर? अच्छा बहुत सारे ये लिख सकते हैं 3 into 10. 3 into 10 देखो. Next
10 we can write 3 into 5 into 2. Now there is the no pair of the same digit का कोई pair ही नहीं बन रहा है, तो so that our answer will be this is not a perfect square. So hope you understand the things what is the perfect square. Okay, now एक आंसर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. Tell me 100 is a perfect square or not? क्या 100 perfect square है या नहीं है? Write in the comment section and don't take so much time when you are writing in the comment section. Okay, immediately give your response because we have the less amount of the time. Yes, Aman Karola, Dhruv. Okay, Dhruv Ramola, welcome. Dhruv Ramola 10 into 10. Kavya Parmar, yes sir, because it is not digit one number. Okay, Priyans, but yes, Sania Parveen, yes. Okay, so this, yes sir, this is the 100. 100, it is the product of the two number 10 into 10. 10 into 10. अच्छा 100 को हम ये भी लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई 2, बट इस केस में नहीं, ये तो गलत चीज है. हमने क्या बनना चाहिए? इट विल बी द पेयर ऑफ द सेम डिजिट. Okay, product of the pair of the same digit. So 10 into 10, it is possible. So then it is 100. So we can say that this is a perfect square. Okay. So first thing, what is the square? The square is the product of the given number by itself is known as square. Now perfect square means if the for example 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite all the natural number. The square of the all the natural number 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square 9, 5 का square 25, 6 का 100 का करें तो 10,000. तो the square of the all the natural number जो आंसर बनेगा that are the perfect square. Okay, now I am explaining the some property based on the square कि जैसे कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे फॉलो होगी. कहीं पे आपको पूछ दे कि टेल मी राइट द आंसर इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. ओके, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, उनको वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आप लोगों के पास है, फर्स्ट, ए परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव. ओके, ए परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर negative. Okay, the value of the perfect square, yeah, perfect square means for example minus 4. So 4 is perfect square because its product we can write 2 into 2. 9 is a perfect square, so 3 into 3. But if I ask to you minus 9, tell me minus 9 is a perfect square or not? क्या ये perfect square है या नहीं है? तो sir, it is not a perfect square because we cannot write it in the minus 3 into 3. अब बताओ क्या ये same digit है? Digits are same but the sign are different. तो minus 3 अलग नंबर हो गया, 3 अलग नंबर हो गया. तो क्या ये सही है सर? ये तो क्या होना चाहिए था? 3 into 3 या ऐसा होता minus 3 into minus 3. तब माइनस और माइनस कितना होता? प्लस होता. ओके, तुम अब क्वेश्चन बताओ minus 100. Now write in the comment section minus 100 is it a perfect square? Okay, yes or no? I am waiting your answer. Yes or no? Please write in the comment section. Minus 100 is it a perfect square? No sir. Okay, minus 100 is not a perfect square because its product will be 10 into 10. But one negative sign only one. तो now minus 10 is the different number और 10 is the different number. Sign भी अलग लगा रहे हैं तो नंबर भी अलग अलग हो गया. Okay, okay, okay. No, Ayush Chavan, very good. Dhruv Ramola minus 10 into 100 minus 100. Okay, next thing, the next point here, next rule is, okay, and write this thing on your notebook. The second rule means the first rule is in perfect square is never negative, and the second rule, a square number is never end in 2, 3, 7, 8. The square number is never end in 2, 3, 7, 8. 2, 3, 7, 8. कोई भी स्क्वायर कर लो, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81. Okay, but we will not get at the end of the square is 3, 7, 8. ओके, अगर आप 2, 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर करो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ओके, तो इसके लास्ट में कितना आएगा 4. द लास्ट डिजिट इज 9, 4, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 10 का करोगे तो 100. ओके, अब आप बोल तो देन व्हेन यू
check this all the number, so there is there is nothing any number as a last digit 2 3 7 8, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लास्ट में क्या हो 2 3 7 8, है कोई ऐसा नंबर? अब आपके क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर इफ देयर आर द सो मेनी नंबर वी कैन टेक एनी नंबर, मींस 1 लाख ले लो, 2 ले लो, 2009 ले लो, वहां भी तो कुछ हो सकता है। तो अगर मैं बड़ा नंबर लेके चलूं, तो इफ आई एम टेकिंग द बिगर नंबर 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 2 डिजिट नंबर 48, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द 48? तो 48 मल्टीप्लाई बाय 48, तो हम लोगों को पूरा नंबर कैलकुलेट नहीं करना है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर 64, अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे तो क्रॉस आ जाएगा, तो लास्ट में कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। इट मींस जो यहाँ पे लास्ट डिजिट आ रही थी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो व्हाट इज द लास्ट डिजिट हियर 4। अब आप बोलो सर 81 मल्टीप्लाई 81, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्स्ट 2 डिजिट 1 into 1 ही बच रहा है। 92 लेके चलो, 92 into 92, तो 92 into 92, the product of last 2 digit is 4. It means when we obtain the square of any number, तो never we will get the last digit in the form of 2 3 7 8. Okay, so what is the question arising here? Yeah, how can we use this type of this concept in our numerical? So one question I am giving to you, if the question 9122 9122, okay, so then my question is it a perfect square or not? क्या ये perfect square है या नहीं है? नहीं होगा सर, because the last digit is 2 लास्ट डिजिट में आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। ओके, यहां देखो 9 लास्ट नंबर, 16 6 इज द लास्ट नंबर, तो क्या 6 यहां कहीं है? नो, इसका मतलब 6 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो भी सकता है, ऐसा नहीं कुछ नंबर। अब मैंने आपको बोला 2 to 6, तो ये जरूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर हो, बट 6 है तो डेसिमल में भी निकलेगा तो करेक्ट निकलेगा। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग ऑन योर माइंड, इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दैट्स लास्ट डिजिट या लास्ट नंबर नेवर इन द फॉर्म ऑफ द 2 3 7 8, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में 2 3 7 8 लास्ट डिजिट नहीं होगा। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस आर गिवन इन योर बुक, exercise 3a question number 3, exercise 3a question number 3. So I am taking only 1-2 parts 3, so 4 8 9 6 5, 1 minute है, 1 minute sir, determine the even or not, हाँ 8 9 1 3 8, so write in the comment section it is a perfect or not, is it a perfect square or not, क्या ये perfect square है या नहीं है? Write in the comment section. No sir, it's not. Is it not a perfect square? Because the last digit is 8, and I already told to you the square number. ओके, कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट में अगर क्या आ जाए 2 3 7 8, इफ वी कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इफ लास्ट डिजिट इज 2 3 7 8, तो इट विल बी नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द योर आंसर? आई एम वेटिंग योर कमेंट सेक्शन। नो, ओके गुड, सो मेनी स्टूडेंट्स आर सेंडिंग नो। ओके, वेरी गुड सर। ओके, आई कैन नॉट अनाउंस द नेम ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्रॉम हियर, सो बिकॉज़ इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल। Okay, the first rule is a perfect square is never negative. Second rule is the perfect square if the digit of any number at the last 2 3 7 and 8, so this type of the number is not a perfect square. Next number is next concept. Okay, next concept, a number, okay, listen there carefully, a number of 0 means 0, kitne 0 1 2, the number of 0 at the end of the perfect square is always even means the example is 9 1 2 3 4. Okay, so how many zeros are here? 4 0, so it means the number of zeros are even, तो ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? क्या 9 1 9 फिर 90,000 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक हाउ मेनी डिजिट 0 आर गिवन देयर, तो इफ द 0 1 2 3 4 0 आर हियर, 4 0 आर गिवन। ओके, 4 0 एंड 4 मतलब 0 कितने, दिस 4 इज even, it means the number of 0 are in the even, तो it means the perfect square it is possible, इसका perfect square क्या होगा? possible है। बट अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया 9 1 2 3 0, now the number of zeros is odd, the number of 0 is odd number, तो so this is not a perfect
स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया? यू डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? राइट इन द कमेंट सेक्शन। यस अर्पित रमोला, यस सर, गुड। ओके, नो, यस सर, नो, ओके। देखो सर, once again I am explaining this thing. First check the number of zero. The number of zero 1 2 3 4, 4 zeros are given. So 4 0 means this is the even order, मतलब the digits 4 0 are given. It means it is the how many it is even या odd. जो आपके जीरो दे रखे हैं उनके नंबर कितने? The number of zero is even या odd? So the number of zero is even. The number of zero is even. So it means the perfect square is possible. Okay, perfect square is possible. Yeah, it means we can calculate the perfect square. Okay, but the number of zero, it means I am taking 9 1 2 3. The number of zero, it is odd. तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी नहीं निकलेगा. ओके, एक्यूरेट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. देखो जरा, ये कितना हो गया 1 2, तो इस डबल जीरो का एक जीरो, डबल जीरो का एक जीरो, और 9 का कितना हो गया 3. बट यहाँ पे नहीं होने वाला. ठीक है, नेक्स्ट थिंग. Okay, then in the number of zero. Now the fourth rule is the square. इसको मैं explain नहीं कर रहा, इसे सुन लो. The square of an even number is always even, and the square of odd number is always odd. The square of even number, for example, 8. 8 is even number. 8 is even. तो its स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8? इट इज 64. तो 64 एंड द लास्ट डिजिट इज 4. तो 64 इज इवन या ऑड? इवन नंबर ना. इट मींस द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, इट्स स्क्वायर इज 81. तो इट्स स्क्वायर इज आल्सो ऑड नंबर. इट मींस द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज even, and the square of odd number is odd. Okay, so hope you understand this thing. Now the last thing I am taking means last formula, last concept is given, the square of the proper fraction. For example, fifth part, 1/3. तो square means product by 2 time. तो the square is denoted by power 2. स्क्वायर किससे डिनोट करते हैं? इससे. इसका मतलब दिस इज द स्क्वायर. इट मींस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3. तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1/3? तो स्क्वायर ऑफ 1/3. ओके, तो स्क्वायर ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1/3 into 1/3. 1/3 into 1/3. तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 9. Its value is equal to 1/9. But what is the concept here? So here is, this thing is important. The square of the fraction, the square of a proper fraction, ध्यान रखना, the square of the proper fraction, it is the fraction, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 1/9. तो the square of the proper fraction is always less than the given fraction. What is the given fraction? 1/3. तो 1/3, इसमें लेस और ग्रेटर कौन होगा? तो the square of the proper fraction is always less than 1/3. इसका मतलब 1/3 बड़ा होगा और 1/9 क्या होगा? छोटा होगा. यहाँ देखो 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो डिजिट ऊपर क्या आएगा, और 1/9 को डिवाइड करो तो छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन ग्रेटर आएगा. बड़े नंबर से डिवाइड करोगे क्वेश्चन और छोटा आएगा. तो विच नंबर इज ग्रेटर? 1/3 इज ग्रेटर. विच नंबर इज स्मॉलर? 1/9 इज स्मॉलर. तो इफ एनीबॉडी आस्क्स टू यू द स्क्वायर ऑफ द फ्रैक्शन, इफ द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन. ओके सर. ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा. 1/9, yeah, that no was for ever question. Okay, I guess Sivan Joshi, yes sir. Okay, thank you for your comments. Those are watching this video. Okay, and thanks for all the students those are watching this video. और please inform the other students, क्योंकि उन लोगों का भी कुछ चीजें छूट जाएगी. मुझे पता कुछ बच्चे बाद में भी देख लेते हैं पर कुछ अभी भी वॉच नहीं कर रहे हैं, तो देख लो ध्यान से बच्चे. ठीक है, नेक्स्ट इज द मेथड. ओके, हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट? अच्छा, एक जो लास्ट मैंने आपको बताया था, द फिफ्थ रूल वाज द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन. तो एक एग्जांपल देख लो, 4/5.
तो 4/5 इट्स स्क्वायर, स्क्वायर मींस ये स्क्वायर 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 4 4 16, 5 5 25. नाउ टेल मी व्हिच इज ग्रेटर, 4/5 इज ग्रेटर या 16/25 इज ग्रेटर, एंड व्हिच वन इज लेस देन. तो मैंने क्या बोला था, द स्क्वायर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, दिस पार्ट इज लेस देन, दिस इज लेस देन by the given fraction. So this is greater and it is smaller. Okay, डेसिमल की फॉर्म में लेके चलते हैं कोई नंबर. If the 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, this thing we can write 2/10, तो 2/10 स्क्वायर, तो what is its value, 2 2 जा 4/10, 10 जा 100. So now tell me which is greater. अच्छा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा, 20, तो 20, तो प्लॉट द डेसिमल बिफोर द 2 digits. तो कितना हो जाएगा, 0.02 digit 4. तो दिस इज द स्क्वायर. नाउ टेल मी व्हिच वन इज द ग्रेटर. तो द स्क्वायर डेसिमल ही तो था, तो 0.04 एंड सेकंड इज 0.2. तो व्हिच इज द ग्रेटर, व्हिच इज लेस देन. तो दिस इज लेस और दिस इज ग्रेटर. Okay, the next the topic is test for a perfect square. Is how can you identify this number is a perfect square या non perfect square. Okay, कोई भी नंबर आप चेक कैसे करोगे, तो there are the so many method. First one is the very simple one. So I am taking some example from our book 1296. Okay, तो you on solving the question, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना. तो क्वेश्चन इज it a perfect or not. Okay, is 1296 a perfect, अगर क्या ये परफेक्ट है या नहीं है. तो हाउ कैन वी चेक इज इट अ परफेक्ट, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो हाउ कैन वी सॉल्व, हाउ कैन वी चेक द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो बाय द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन. So the prime factorization, you know that the 1296. So find the prime factorization. Okay, started from 2. So because the last digit is 6. Okay, तो एक चीज मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, इसको ध्यान से कॉपी पे नोट कर लेना. The product rule. First is 2. Okay, which number is divisible by 2? If the last of any number is 2, 4, 6, 8 या 0, that number is divisible by 2. Next 3. कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं. If the sum of the digit, sum of digits are divisible by 3, the number also divided by 3. For example, question is 9 3 6. अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं है. तो चेक करो, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, 6 और 3 9 और 9 और 9 18. तो 18 इज डिवाइडेड बाय 3, इट मींस 9. ओके, सो दैट वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ओके, तो दिस आर द 2 और 3 आर द बेसिक, और बाकी और जैसे जैसे चलते रहेंगे मैं आपको बताते रहूंगा. ठीक है, बट अभी मेन हमारा क्वेश्चन ये है 1296. तो 2 6 जा 12, देन 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, लास्ट डिजिट 4, देन 1 2 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4. नेक्स्ट 2 8 जा 16, 2 1 जा 2. नेक्स्ट 2 से डिवाइडेड, नो, इट इज पॉसिबल बाय 3. 8 और 1 9, 9 सम ऑफ द डिजिट इज 9 और 9 इज डिविजिबल बाय 3. तो सो दिस नंबर आल्सो डिवाइडेड बाय 3. तो 3 2 जा 6, 2 1 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. Now what are the pair? So the pair is 2 into 2, 2 into 2 into 1, next 2 into 2, 2 into 2, next 3 into 3, 3 into 3, and last is 3 into 3. So these are the prime factorization of the 1296. These are the prime factorization of the 1296. अब but question is it a perfect or not, क्या ये perfect है या नहीं है. तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है the pair of the digit. ओके, द पेयर ऑफ द प्राइम फैक्टर. ओके, जो 2 है जैसे, तो 2 का पेयर बनना चाहिए, 3 का पेयर बनना चाहिए. अगर जो नंबर छूटेगा, इफ देयर इज एनी नंबर इज लेफ्ट, तो सो दैट नंबर इज नॉट अ कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर. तो चेक इट, दिस इज द पेयर. ओके, इट इज अ कंप्लीट पेयर. नेक्स्ट अगेन 2 कंप्लीट पेयर, 3 3 इट इज कंप्लीट पेयर, अगेन 3 इज कंप्लीट. तो all are the number, all are the prime factorization are in the form of a complete pair. Okay, pair बन रहा है, पूरा pair बन रहा है. तो so we can say that 1296 is a perfect square.
1296 is it a perfect square? तो hope you understand this thing. अच्छा एक चीज और है, अगर यहाँ पे एक और 3 होता, if there is the one more 3, अगर एक और 3 होता, now tell me क्या 3 का पेयर बन रहा है? No, the 3 is left as a single number and its pair is not possible. So that time the given number is not a perfect square. But there is no number is left. सारे नंबर क्या हो रहे हैं? पेयर बन रहे हैं. तो so the number is a perfect square. And in this question I am adding one more thing. एक और चीज ऐड कर रहा हूँ. क्या ऐड कर रहा हूँ? What is the square root? What is the square root? Square root of 1296. अब what is the square root? अब what is the square root? Square root क्या होता है सर? तो देखो square root 2. What is the square of the 2? Square of the 2 means 2 multiplied by 2. Square of 2 is 4. Now what is the square of 3? 3 square 9. What is the square of 5? 25. Next what is the square of 10? It is 100. It is 100. Okay, तो 4 इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 2 multiplied by 2. So when we take the 2 multiplied 2 and writing this number as a single pair, single number, जो पेयर बना उसको सिंगल लिख दो, means it come again in its original form. 3 square 9. तो 9 is 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 multiplied by 3. तो इस 3 को 1 लिख दो. तो again it is coming its original form. 25 तो 5 into 5. 5 on taking 1 5, so again this 5 is coming on its original form. 100, so this 100 we can write 10 into 10. On taking 110, so then again it is coming its original form. कहने का मतलब अब मैं आपको पूछूं, what is the square of 100? What is the square of 10? So the square of the 10 is 100. The square of the 10 is 100. Now I am asking to you, what is the square root? What is the square root of 100? Square root of 100 तो क्या हो जाएगा सर? The square of root of 100 means it is the complete perfect square. ये perfect square बन रहा है ना, मतलब 10 into 10. तो 10 into 10 का सिंगल नंबर लेना है. That means what is the square root? 10 means 10 10 जा 100 स्क्वायर करेंगे तो ये बनना चाहिए और वापस फिर ये बनना चाहिए. तो 10 10 जा 100. Okay. Now what is the square root of 625? So 625 it is the 25. Okay, when we find the square of 25, so square of 25 it will be 625. So what will be the opposite? It means we can say that square root is opposite of the square. Simply in the normal world what we can say that square root is the opposite of square. Opposite of square यही तो बन रहा है. देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25. इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट इज 5. ओके, तो स्क्वायर इज 25 और स्क्वायर रूट इज 5. इट मींस स्क्वायर रूट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ स्क्वायर. ओके, नाउ राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 9. राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द 9. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द 9? Write in the 81 and again write in the comment section what is the square of 81. Write in the comment section what is the square of 81. What is the square root of 81? The square of 9 is 81. What is the square root of 81? Okay, good. Ayush Chavan, very good. 9. Okay, now I am asking to you what is the square of 9? The square of 9 is 81. Square is 81. And what is the square root? Square root. So square root of 81 is 9. Okay, it means what is the square root? Normally we can say the definition of the square root. It is the opposite of the square. किसी नंबर का स्क्वायर करो तो जो नंबर बनेगा, जैसे 9 का स्क्वायर किया तो 81 बना, तो 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर बनेगा. तो स्क्वायर रूट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द नंबर. बट when you have given the bigger number, बहुत बड़े बड़े नंबर है, that time how can you find the square root? उस टाइम पे स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करोगे? यही जैसे क्वेश्चन मैंने लिया, what is the square root of 1296. पहले तो क्वेश्चन था is it a perfect square? So your answer is yes sir, is it a perfect square. But now I am asking to you what is the square root of 1296? What is the square root of 1296? So the square root of 1296. Okay, what is square root of the 1296? So find the prime factorization
What is the prime factorization? 2 multiply by 2 multiply by 1 2 again 2 multiply by 2 multiply 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. So this is the perfect square root. So this is the prime factorization of 1296. Now pick a pair of same digit. Make a pair of the same digit. Make a pair of the same digit. So this is the first pair. Okay, this is your first pair. Next, second pair of the same digit. This is the pair of next same digit. This is a pair of same digit. Okay, so on making the pair of the same digit, take a one number from that pair. या pick a one number. इससे कितने नंबर लेने आपने? One number. Now from again one number, again one number, again one number. Now multiply all these numbers. Multiply to each to other. Okay, all of you. So 2 multiply by 2 multiply by 3. So 2 2 जा 4 into 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. ये सबको मल्टीप्लाई करो. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 is equal to 36. So what is the square root of? What is the square root of? So square root of 1296 is equal to 36. Square root of 1296 is equal to 36. Now I am reversing our question. I am changing my question. What is the square of 36? What will be the square of the 36? And as you know that square means multiply the number by itself. Multiply the number itself. That means 36 multiply by 36. 36 multiply 36 जब हम लोग करेंगे तो we will get 1296. This number, वही number मिलेगा. So it means what is the square root? So square root is just opposite of the square. Okay, so hope you understand this thing. How can you calculate the square root of any number? Okay, 1296. Okay, very good. And I am happy to all of you from the all of the students because you are giving your response and daily attending the class. Okay, thank you sir. 1296. So many answers are coming. 1296. Okay, now I am taking so many another examples and please solve the questions related to this type of the concept. Okay, solve the questions are given in your exercise based on these concept. Okay, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताया तो अब आप क्या करना घर पे प्रैक्टिस के लिए बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना. नाउ स्क्वायर रूट SQU